knows no country because knowledge belongs to the humanity and it is the torch which illuminates the world by Louis Pasteur. Respected Principal Ma'am, Renu Ma'am, Alice Ma'am, dear teachers and students, a very warm morning to all of you. Today, you all are thinking that why are we here? है ना? आप लोग सोच रहे होंगे कि हम यहाँ क्यों हैं? But before telling the actual reason, I want to ask a question. Okay, I want to ask a question. What is the date today? 10 November. Loudly. 10 November. Very good. Yes, today is 10 November. But what happened on this day? Can someone tell me? Yes, ma'am. I know. Anaya, please come. Today is World Science Day for Peace and Development. Very good, Anaya. But ma'am, I don't know more about today. Can you explain me, please? Hold on. Not me. But I have someone who gonna explain you what happened today. And for this, I have Aditi from class 7. Aditi, please come forward. Thank you, ma'am. So, Aditi, tell me, what is exactly you know about today? Today is no ordinary day. It is World Science Day for Peace and Development. It is celebrated every 10 November, highlights the significant role of science in society and need to engage the wide public in debates on emerging scientific issues. It also underlines the importance and relevance of science in our daily life. The first World Science Day for Peace and Development was celebrated under UNESCO auspices on 2002 10 November. Oh, now I get it. तुम्हारा मतलब यह दिन साइंस को समाज के साथ जोड़ने और साइंटिफिक प्रोग्रेस को पीस एंड डेवलपमेंट के साथ जोड़ने के लिए बढ़ावा देता है. थैंक यू अदिति फॉर शेयरिंग दिस नॉलेज विद अस. बट क्या आपको पता है कि इस बार वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट की ऑफिशियल थीम क्या है? Yes, Anayati, I know. Really? Yes, So why are you waiting? Tell us. the official theme for World Science Day for Peace and Development 2025 is Trust, Transformation and Tomorrow, the science we need in 2050. ये थीम इस बात पर जोर देती है कि फ्यूचर की डिफिकल्टीज के सॉल्यूशन करने और 2050 तक एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें साइंस की बहुत ज़रूरत होगी. You are right. अगर हम सबको अपना फ्यूचर बेहतर बनाना है तो साइंस का सहारा लेना ही पड़ेगा. साइंस के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है. But do you know what is the meaning of trust, transformation and tomorrow in the context of World Science Day? Trust, it means having confidence in science as a reliable source for solving global challenges, supporting peaceful and sustainable societies. Transformation, it refers to using science and its application to create positive fundamental challenges in society and to address global challenges like climate change, poverty, health, etc. Tomorrow, it refers to future-focused, sustainable and equitable solutions that science can provide. कहने का मतलब है कि साइंस पर ट्रस्ट करके और उसका यूज करके ग्लोबल चैलेंजेस को सॉल्व करके शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण किया जा सकता है और इसके अनुप्रयोग का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के चैलेंजेस का सॉल्यूशन करते हुए ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन को बनाया जा सकता है और इन परिवर्तनों के द्वारा एक ऐसे
एक ऐसे टुमारो यानी भविष्य को बनाया जा सकता है जो टिकाऊ और सही हो। बट हम स्टूडेंट किस तरह से इस डे में अपना इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं? हेलो, मैं बताती हूँ। We can get involved in by participating in science fair workshop, debates, watching documentaries, visiting labs, and can get knowledge to promote science as a tool for peace and prepare for future challenges. Correct, Ananya. इस तरह से हम सब स्टूडेंट वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट में अपना इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं। Thank you, Anaya, for sharing this knowledge with us. But रुकिए, अभी खत्म नहीं हुआ है प्रोग्राम। मैंने आपसे कहा था ना लास्ट में, I want to know how much have you learned from this activity through the question answer round. Are you ready? Yes, ma'am. Are you ready? Yes, ma'am. एक और बार, Are you ready? Yes, ma'am. So, your first question is, when was the first World Science Day for Peace and Development celebrated? Raise your hand if you know the answer. No running, no shouting. Come. Ma'am, 10 November 2002. Very good, Siddhi. Clap for her, everyone. My second question is, who declared World Science Day for Peace and Development? Who declared World Science Day for Peace and Development? Come. UNESCO. Correct answer. It is UNESCO. My third question is, what is the theme of World Science Day for Peace and Development 2025? The theme is Trust, Transformation, Tomorrow, the science we need in 2050. Very good, Abhyuday. Clap for him. कंजूसी किस बात की आप लोग क्लैप करने में करते हैं? Last but not the least, what have you learned from today's program? आपने आज के प्रोग्राम से क्या सीखा? Only one student. Come, Samarth. Ma'am, today I have learned from this activity that science can be boom or bane. अगर हम इसका सही से इस्तेमाल करते हैं then it will be benefited. मगर इसका misuse हुआ तो it will be destructive. Very good, Samarth. Give a big hand to Samarth. I hope आज ये सिर्फ 4 या 3 बच्चों ही नहीं, आप लोग ने भी कुछ ना कुछ आज के बारे में सीखा हो। सीखा कुछ आप लोग ने? Yes, ma'am. Say loudly. Yes, ma'am. एक और बार। Yes, ma'am. Very good. अच्छा, तो आज का प्रोग्राम हम यहीं पे खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई थीम, एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।